हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश गुलेरिया और आप देख रहे हैं हाई टेक व्यू। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 21 है और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 134 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के पार्ट्स में हमने 108 क्वेश्चंस को कवर किया था और आगे के सभी क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स का पार्ट 5। The question is, a set of micro instructions for a single machine instruction is called dash. सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन के सेट को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए प्रोग्राम, बी कमांड, सी माइक्रो प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी माइक्रो कमांड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माइक्रो प्रोग्राम। The next question is, a decoder is required in a case of a dash. डैश के मामले में एक डिकोडर की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आर ए वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, बी हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, सी मल्टी लेवल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल टाइप ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए vertical micro instruction. The next question is, what is microprocessor? Microprocessor क्या है? Options are A a multi-purpose PLD that accepts binary data as input, B a multi-purpose PLD that accepts an integer as input, C a multi-purpose PLD that accepts whole numbers as input, and option D a multi-purpose PLD that accepts prime numbers as input. The correct answer is option A a multi-purpose PLD that accepts binary data as input. The next question is, which of the following is correct about 8086 microprocessor? निम्नलिखित में से कौन सा 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में सही है? ऑप्शंस आर ए इंटेल्स फर्स्ट x86 प्रोसेसर, बी मोटोरोलास फर्स्ट x86 प्रोसेसर, सी नैनो एक्सप्लोर x86 प्रोसेसर एंड ऑप्शन डी none of these. The correct answer is option A Intel's first x86 processor. The next question is, which of the following is a type of microprocessor? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर का एक प्रकार है? ऑप्शंस आर ए CISC, बी RISC, सी EPIC and option D all of these. The correct answer is option D all of these. The next question is, the microprocessor of a computer can operate on any information if it is present in dash only. कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि यह केवल डैश में मौजूद है। ऑप्शंस आर A program counter, B flag, C main memory and option D secondary memory. The correct answer is option C main memory. The next question is, what is the word length of an 8-bit microprocessor? 8-bit microprocessor की शब्द लंबाई क्या है? Options are A 8 bits to 64 bits, B 4 bits to 32 bits, C 8 bits to 16 bits
and option D 8 bits to 32 bits. The correct answer is option A 8 bits to 64 bits. The next question is, in 8-bit microprocessor, how many opcodes are present? 8-bit microprocessor में कितने opcode मौजूद होते हैं? Options are A 246, B 278, C 250 and option D 256. The correct answer is option A 246. The next question is, which of the following is true about microprocessors? निम्न में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसरों के बारे में सही है? Options are A. It has an internal memory. B. It has interfacing circuits. C. It contains ALU, CU and registers. And option D. It uses Harvard architecture. The correct answer is option C. It contains ALU, CU and registers. The next question is, which of the following is the correct sequence of operations in a microprocessor? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर के संचालन का सही क्रम है? Options are A. Opcode fetch, memory read, memory write, input output read, input output write. Option B. Opcode fetch, memory write, memory read, input output read, input output write. Option C. Input output read, opcode fetch, memory read, memory write, input output write. And option D. Input output read, opcode fetch, memory write, memory read, input output write. The correct answer is option A. Opcode fetch, memory read, memory write, input output read and input output write. The next question is, which of the following is a special purpose register of microprocessor? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर का एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है? Options are A. Program counter, B. Instruction register, C. Accumulator and option D. Temporary register. The correct answer is option A. Program counter. The next question is, how many flip-flops are there in a flag register of 8085 microprocessor? 8085 माइक्रोप्रोसेसर के फ्लैग रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? ऑप्शंस आर A 4, B 5, C 7 and option D 10. The correct answer is option B 5. The next question is, PCB stands for, PCB का अर्थ है, ऑप्शंस आर A. Print current board, B. Printed circuit board, C. Power circuit board and option D. None of these. The correct answer is option B. Printed circuit board. The next question is, in a desktop computer, the board containing microprocessor, RAM and other components is called dashboard. डेस्कटॉप कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर, रैम और अन्य घटकों वाले बोर्ड को डैशबोर्ड कहा जाता है। ऑप्शंस आर A. ग्राफिक्स, B. मदर, C. वाइट एंड ऑप्शन D. नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. मदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस आर A. माउस, B. मदरबोर्ड, C. SMPS and option D. monitor. The correct answer is option B. motherboard. The next question is, what is the motherboard? मदरबोर्ड क्या होता है?
Options are A. Scanner and other things are part of motherboard. B. Keyboard otherwise known as motherboard. C. A circuit board which connects all the elements. And option D. It is a type of file server. The correct answer is option C. A circuit board which connects all the elements. The next question is, different components of the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड के विभिन्न घटक समांतर विद्युत संचालन लाइनों के सेट से एक साथ जुड़े हुए हैं। इन पंक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए कंडक्टर्स, बी बसेस, सी कनेक्टर्स and option D consecutives. The correct answer is option B buses. The next question is, the DC voltage on most circuit board is? अधिकांश सर्किट बोर्ड पर DC वोल्टेज है। ऑप्शंस आर A -12 volts, B -5 volts, C +5 volts and option D +12 volts. The correct answer is option C +5 volts. The next question is, several lines at the end of the post are used to find the operating system. What is this called? ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने के लिए पोस्ट के अंत में कई पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए CMOS, B फ्लैश रोम, C bootstrap loader and option D none of these. The correct answer is option C bootstrap loader. The next question is, on PC power supplies the wire attached to pin 1 is usually. पीसी बिजली की आपूर्ति पर पिन 1 से जुड़ा तार आमतौर पर होता है। ऑप्शंस आर ए ब्लू और रेड, बी ब्लू और व्हाइट, सी रेड और ब्लैक एंड ऑप्शन डी व्हाइट और ऑरेंज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी व्हाइट और ऑरेंज। The next question is, the communication device that allows the computer to access the network is called a dash card. संचार उपकरण जो कंप्यूटर को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति देता है उसे डैश कार्ड कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए मॉडेम, बी वीडियो, सी साउंड एंड ऑप्शन डी नेटवर्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेटवर्क। The next question is, a computer electronic circuit with transistor and other electronic components on a small silicon chip is called a. एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए वर्कस्टेशन, बी CPU, C मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्शन डी integrated circuit. The correct answer is option D integrated circuit. The next question is, dash connects the computer to the network media. Dash कंप्यूटर को नेटवर्क मीडिया से जोड़ता है। ऑप्शंस आर ए केबल, बी हब, सी टर्मिनेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। The correct answer is option C terminator. The next question is, a personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board called dash. एक पर्सनल कंप्यूटर एक सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करता है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शंस आर ए माइक्रोप्रोसेसर, बी सिस्टम बोर्ड, सी motherboard and option D all of these.
The correct answer is option C, motherboard. The next question is, a port of computer may be connected to dash. कंप्यूटर का एक पोर्ट डैश से जुड़ा हो सकता है. Options are A, expansion card, B, CPU, C, motherboard, and option D, both A and C. The correct answer is option D, both A and C. So next question is, in a computer, expansion cards are inserted into dash. कंप्यूटर में एक्सपेंशन कार्ड डैश में डाले जाते हैं. ऑप्शंस आर ए, स्लॉट्स ऑफ सीपीयू, बी, पेरिफेरल डिवाइसेस, सी, हार्ड डिस्क ऑफ सीपीयू, एंड ऑप्शन डी, बैक ऑफ मॉनिटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्लॉट्स ऑफ सीपीयू. सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 134 क्वेश्चंस को कवर किया है. डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. यदि अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. सो डियर फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.